11 डिसेंबर 2025 म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिनानिमित्त गिरिप्रेमी या पुण्यातील गिर्यारोहण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अत्यंत नावाजलेल्या संस्थेमार्फत हिमनदी या विषयावरती कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. ह्या कार्यक्रमामध्ये हिमनदी या क्षेत्रामध्ये काम करणारे विविध मान्यवर यांनी आपला अभ्यास व आपले विचार सर्वांसमोर प्रस्तुत केले. तर कार्यक्रमाच्या या भागामध्ये आपण श्री कृष्णानंद यांचे हवामान बदलामुळे हिमालयीन हिमनद्यांवर होणारे परिणाम या संदर्भातील विचार जाणून घेणार आहोत. श्री कृष्णानंद हे आयसर पुणे येथील हिमनदी शास्त्र या विषयाचे तृतीय वर्षीय PhD विद्यार्थी आहेत. गुड इवनिंग. माय नेम इज़ कृष्णानंद. मुझे मराठी नहीं मालूम है. मैं केरला से आ रहा है और मैं काम करता है कारगिल में. आई वाज स्टडीइंग फिजिक्स. आई गॉट बोर्ड. I wanted to do something in mountains, so now I am glaciologist. So if the presentation is there, I will start. Okay. Yeah, so from Kerala to Kargil, 3,000 kilometers away. Okay, next slide. Next slide. Yes. Can you play this video? Yeah, so this is we going towards the glacier. When we are going to the glacier, we heard from villagers. उधर का लोग बोल रहा था आसपास में ये बाढ़ हो गया है, तो हमें एक्सपीरियंस करना है. और एक्जैक्टली व्हेन वी आर गोइंग सम फ्लड्स आर हैपनिंग एंड पीपल आर आस्किंग अस व्हेन विल इट हैपन एंड वी डोंट हैव द आंसर. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो next slide. So why are people worried here? It's because on top of this valley where we are going, there is a big glacier and very big lake beneath it, and this lake can burst at any moment. So excuse me, just give me the presenter. Yeah. I'll ask someone to prepare. Sure. And you can just next. Okay. So this is the image of the lake, and you can see there is a glacier on top and ice is breaking off from it and the water level is increasing. So next slide. So as we set up a tent and we are going to do the experiment, in the night all of us are worried. Even every small sound we hear, we think it has come down, we will die. So luckily nothing happened. So before understanding the danger of this, I would like to tell in simple words what is a glacier and why should we be worried. Next slide. Yeah, so here I have just put some images of glacier. कुछ photos आने वाला है. ये सब glaciers है. Next. Yeah, ये सब glaciers है. आप में कुछ लोग देखा होगा, कुछ लोग देखा नहीं होगा. ये देखने में एक आइस का रिवर जैसा दिखता है, और ये ग्लेशियर्स नहीं है, ये रिवर है. ग्लेशियर्स में भी रिवर जैसा ट्रिब्यूटरीज होता है, वो मर्ज होता है, सब कुछ होता है, पर ये रिवर है.
ग्लेशियर्स पहाड़ी में मिलता है, पर सभी पहाड़ी में ग्लेशियर्स नहीं होता है, सो ये भी ग्लेशियर नहीं है। और एक ग्लेशियर वाइट होता है, पर सभी वाइट चीज़ ग्लेशियर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट। ग्लेशियर्स का टिपिकल साइज इधर दिख रहा है। वो इट विल बी 10 किलोमीटर। आई एम जस्ट सेइंग सम नंबर्स कमिंग टू माई माइंड। टिपिकल नंबर इज 10 किलोमीटर लॉन्ग, 1 किलोमीटर वाइड, 100 मीटर डीप। व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन ग्लेशियर, जब आप ग्लेशियर का ऊपर गड़ा हो, तो आपका हाइट का 50-60 टाइम्स आइस आपका नीचे है, तो बहुत बड़ा चीज़ है। नेक्स्ट। अभी आपको ये पता होगा, मैं केरला से है, अभी इधर पुणे में मुझे बहुत ठंड लगता है। जैसे आप ऊपर ऊपर जा रहे हैं, एलिवेशन में ऊपर ऊपर जा रहे हैं, इट विल बिकम मोर एंड मोर कोल्डर एज यू गो अप एलिवेशन, एज यू क्लाइंब इट माउंटेन, इट बिकम्स कोल्डर एंड कोल्डर। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आज 5 बजे में मैं इसका अंदर बहुत सारा आइस डाला था, और अभी इसमें आइस नहीं है, बस पानी है। तो आइस को बस ओके, हेलो, या सो आइस को पॉलिटिक्स नहीं जानता है। आइस को कोई एजेंडा नहीं है। आइस को बस ये पता है कि 0 डिग्रीज में मेल्ट होना है। तो that is a simple rule in glaciology. When 0 degree temperature crossed, ice melt. That's it. और इधर आप देख सकता है, जब आप ऊपर ऊपर जाता है, एक एलिवेशन में, एक ऊंचाई में टेम्परेचर 0 होता है। उसका ऊपर जो बारिश गिरता है वो बर्फ़ जैसा गिरता है। उसका नीचे जो बारिश गिरता है वो बारिश जैसा गिरता है। ओके, नेक्स्ट। अभी मैं ये हिमालय का ग्लेशियर्स का एक बहुत बड़ा बहुत पहले आई वांट टू से द हिस्ट्री ऑफ ग्लेशियर्स। सो ये ग्लेशियर्स हिमालय में इनिशियली नहीं था, वो बेयर रॉक्स। और ये ऊंचाई है, वो 0 डिग्री का एलिवेशन का भी ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है। तो उधर बर्फ़ गिरता है, तो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ ऐसा गिरता है। नेक्स्ट, ये बर्फ़ है। नेक्स्ट। और ऐसा जो गिरते रहते हैं, 1 किलोमीटर बड़ा बर्फ़, और वो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ऐसा कॉम्पैक्ट होता है। तो यू कैन सी ये आइस का एक इमेज है। इधर ये वाइट कलर में आइस देखता है, ब्लैक कलर इज एयर बबल। सो एज इट इज कंप्रेस्ड, इट स्नो बिकम्स आइस। और इतने बड़ा आइस चंक हिमालय के ऊपर ऐसा रखा हुआ है। अभी आइस को एक प्रॉपर्टी है जो हमको नहीं पता है। आइस बहुत गर्म है। नेक्स्ट। या सो नॉर्मली हम एक चीज़ गर्म बोलते हैं जब वो मेल्टिंग पॉइंट का आसपास होता है। इफ़ वी हीट अप मेटल to 1000 degrees, it becomes soft, and you can shape it, you can make swords out of it. Shivaji made swords out of it. Like that, ice always near melting point. In earth, temperature range always close to melting point. So बहुत ज़्यादा आइस हिमालय के ऊपर रखा है और मेल्टिंग पॉइंट का आसपास है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस कंडीशन में आइस को फ्लो कर सकता है, ये सॉफ्ट होता है और ग्लेशियर स्टार्ट्स टू फ्लो। सो इतना बड़ा आइस अभी फ्लो होता है टूथपेस्ट की तरह, बहुत स्लो फ्लो होता है। एक दिन में 10 सेंटीमीटर, बहुत बहुत स्लो। तो आप ग्लेशियर में गए तो बस ग्लेशियर ही दिखता है, वो फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट। पर
आपको टाइम फास्ट करने का कुछ तरीका है तो ग्लेशियर का मूवमेंट दे सकता है. तो दिस इज ए टाइम लैप्स. एक कैमरा ग्लेशियर का फोटो ले रहा है. 10 साल का फोटोस 10 सेकंड में अभी दिखता है. नेक्स्ट. सो हमें ग्लेशियर्स का फ्लो ऐसा देख नहीं सकता है, पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं. इफ यू लुक एट दिस सैटेलाइट इमेज, वन ग्लेशियर अनदर ग्लेशियर संगम हो रहा है इधर. जस्ट लाइक रिवर जॉइन, ग्लेशियर इज जॉइनिंग. नेक्स्ट. सो दिस इज वो टाइम लैप्स है. उसका 10 साल 10 सेकंड में दिखा रहा है. हाँ 1 सेकंड में दिख रहा है. यस. तो जस्ट लाइक rivers, glaciers flow and they have tributaries, they merge. Next. Hey. और जैसे rivers पहाड़ को कार्व करते हैं, मुझे कार्व का हिंदी नहीं पता है. जैसा नेक्स्ट. ग्लेशियर्स ऑल्सो शेप द लैंडस्केप. हम हिमालय में गए तो बहुत खूबसूरत यू शेप्ड वैली देखता है ऐसा. सो उधर पीछे पीछे आइयो पीछे. यस. हाँ बस. यस. तो even though we don't see glaciers here, if you see a valley like this, it means बहुत पुराने ज़माने में इधर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था और वो ऐसा एक वैली बना दिया है. तो you can see glaciers without seeing it. Next. Yeah. Okay. Okay. Yes. There. Maybe range. Okay, okay. Distance is more. Okay, okay. So, now one basic concept I want to tell about glaciers. It is glaciers always have a balance. In our, we say equilibrium. It's just a balance. Glaciers, on top of glaciers, snow falls. And glacier flows down the slope. And as it is flowing down the slope, it is becoming warmer and warmer. So around here, that 0-degree line is there. So when ice reaches beneath 0 degrees, it starts melting. So now we have snowfall, baraf girta hai, or there is melting. Girta hai, melting. So glaciers always try to balance these two together. So if melting increases, glacier try to become small so that the melting area decreases. If melting decreases, glacier become larger so that area of melting increases. It always tries to balance that. That makes glaciers a very important thing for climate change. Glaciers can tell us if the climate is warming or cooling. Next. It is just like a thermometer for Earth. So just जैसे हमको just like when we have fever, we use thermometer. When Earth has fever, we can see that with glaciers. So next. ये बहुत सारा साइंटिस्ट ने काम किया है. From different parts of world, different glaciers, they recorded the length of glacier and they are plotting here. So either each line is different glacier and they are plotting length versus time. So you can see most of the glaciers kind of constant till 1900. After that, suddenly accelerated, becoming small.
टिल 1900 वो कांस्टेंट है, उसके बाद बहुत फास्ट वो छोटा बन रहा है. ये 1900 में क्या हुआ? Yeah, we found that oil makes money. Yeah. Next. So, in science, we are not actually allowed to point fingers at anyone. But अभी साइंटिस्ट को एक कंसेंसस है कि ये क्लाइमेट चेंज रियल है और उसके कारण हम ही है. इट्स लाइक हमारा अर्थ को फीवर है और वायरस हम ही है. और जस्ट लाइक अस, ये भूमि एक ऑर्गेनिजम्स के तरह देखा तो हमें, इफ़ वी हैव cold, if we have a virus, we feel sick for 2-3 days, we sneeze, and virus goes away, we still live. So just like that, Earth is much bigger than us. Glaciers हमारे का बहुत बहुत बड़ा है और whatever we do, the glaciers don't, they can adjust. Earth को adjust कर सकता है और अर्थ को कुछ नहीं होता है, हम उधर नहीं होता है. सो बहुत ज़्यादा लोग अराउंड द वर्ल्ड सेव ग्लेशियर्स बोलता है, पर सेव ग्लेशियर्स बहुत क्या बोलता है, हम बहुत अहंकार. मैन इज़ नथिंग, वर्ल्ड इज़ सो बिग. सो हमको अर्थ को सेव नहीं करना है, हमें हमारे सेव करना है. वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स. सो नेक्स्ट. और आई एम कमिंग बैक टू द स्टोरी व्हेन आई स्टार्टेड. सो वी आर इन दिस विलेज एंड पीपल आर वरीड, बाढ़ आ सकता है. तो एज वी सो climate increasing, temperature increasing, glaciers becoming smaller. When glaciers become smaller, lakes start to form. So just like rivers deposit sediments in the edge, glaciers deposit some rocks here. Earlier, few decades ago, this glacier, this white thing, was still here, and the boundary of that was this hill kind of thing you see. तो वो उसका डेपोसिट्स है. और अभी ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहा है, वो छोटा बन रहा है, तो उधर पानी भर जाता है. और ये एक बड़ा डेंजर है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स बहुत ऊंचाई में मिलता है. तो इतना पानी उतना ऊंचाई में एनी टाइम इट कैन ब्रेक. If one rain comes, this hill break, flood comes, and beneath water, people live, people die. Next. Can you play this video? You can just click on it. Can you just click on that? Yes. Okay. It's fine. It's fine. So right now, what we can do is consensus among scientists. हम लोग को अभी बचाता है. So let's save the people right now. These glaciers can burst. So we try to see how glaciers can respond to climate change. And we try to predict when these floods happen. And prediction is very difficult. ये कभी भी हो सकता है. So we are trying our best to inform the villagers when the flood can happen. We install some sensors near the lake and alert villages when it breaks. But that's all we are actually doing right now.
what we can be doing is like another solution is there. That is, if all of the people know about this, some pressure to the government, and like the world only understands language of money and power. So only way to make change is getting the message across to people. So that is why I am here. So knowledge is power. All of you have this knowledge now. Try to do whatever you can, I think. I don't know. That's all. Yeah. If there are questions, you can ask. If I know, I will tell. Based on the sensors that have been installed, as you have mentioned, how much in advance can people know that something is going to happen? Very important question. So there are some villages which are so close to the lake that even if you know when the flood happens and you alert the villages, flood happened already. So those villages we need to evacuate first. So scientists are advising people in that kind of very close places, don't stay there. But it's complicated. The society, people don't want to move because their grandfather is there. Like that. Krishnanand, this is not a question I want to understand. The configuration, topographical configuration, and 1 degree rise there, Yes. how it affects the behavior of the mountain glacier. Because there are two ground glaciers, valley glacier and mountain glacier. I'm talking about mountain glacier. So depending on lot of factors are there, but slope. If glacier is valley glacier like slope, effect is more. 1 degree rise can cause huge change. For this high slope glaciers, which is mountain, 1 degree rise, that 0 degree wala line doesn't. But Yeah. this will be a uniform rule across all topography. No. With respect to slope, it will depend. So some glaciers respond fast, some glaciers less. Thank you. Yes, depends on the slope. You can have. Which are the factors there for this melting? And can you throw some light about the ice melting in Arctic, Antarctic, or generally people know only global warming, but are there any definite factors which are contributing for this disaster? The simple rule is ice melts at 0 degrees, so that temperature is the main factor. And in Arctic and all, this, I don't know, temperature is the main factor. And the rainfall happening, snowfall happening, those also affect. But how the climate change affects glaciers is through temperature, ultimately. अजून शेवटचे एक 2 क्वेश्चन्स आपण घेऊयात आणि मग पुढच्या सत्राकडे वळूयात. Hello, myself Dr. Ghulam Murtaza. I'm from Leh. I would like to ask a few questions to this gentleman. I'm also from Kargil. When we look at the Parkachik glaciers, it's बहुत वर्ष पे है वो. बहुत सारे सीनियर सिटीजन कहते थे कि वो बहुत आगे तक था. तो first of all, thanks to the Civil Society of Maharashtra, who have concern about the
Yes, Himalayan. Came from the Kargil. Yes, tell us about how it's happened. Look at when we look at the Parkachik glacier, Yes, yes. है ना, that's happened. Unimagined, मतलब एक टाइम पे था बहुत Yes, yes. नेशनल हाईवे तक था. अभी जो है रिट्रीट होके बिल्कुल एंड तक चला गया. तो any solution? What do you think for that? So that we can again conserve it. Yes. Thank you, So this is again my work area is very close to this Panikar village, and Parkachik is very close to it. And I have also seen these images of glacier becoming small. It's becoming small at a very fast rate. And the answer to how to conserve it, that is a bit like what I told earlier. Like in Europe and all, people have tried to put some tarpaulin sheet on glacier to make it melt less, but it's too much money, and money is problem. So So, a lot of glaciers often preserve air bubbles, right? Here. Glaciers often preserve air bubbles, which hold a lot of historical biological data. So, how does the age of a glacier affect its reaction to global warming? Does it, if it does? how does the age of a glacier? As far as I know, age of glacier should not affect. Uh, how is this air bubbles connected to this age of glacier? What? In prehistoric times, if a glacier has been frozen from prehistoric times, then the gases which were frozen along with the glacier inside it create air bubbles that contain data of the that contain chemical data Right. of the gases that existed at that time. Yes, yes. Taking forward this question, already glacial ages has happened. So one thought is that the industrial revolution and the rate at which we have put the carbon dioxide in the atmosphere is a bunch of thought. Yes. But one said in a normal cycle. What is your opinion on that? So this normal cycle has a rate. Okay, so glaciers have a becoming large and becoming small cycle because of this Earth-Sun distance changing and all. So that has a particular speed, but the speed at which we are seeing right now, it's too high for that. Time scales are very different. Okay. Thank you.